we were on the topic fire safety, and we are revising this chapter. So I want to ask you what we have studied, and firstly I will explain a little and then I will ask you. So what we have studied in the fire safety, that fire is very dangerous and we have to deal with fire carefully. So because if like we have to look after the children in our homes, that they should not go near the fire, they should not hurt themselves, like the children are used to play with matchsticks and candles and lighters, so we should take care that they should not use such things, because fire is very dangerous and it can cause a lot of damage and pain. So we should be careful while dealing with fire. We should also look after the children in our house or around anywhere. If we see that the children are using lighters or matchsticks, and we should stop them from using them. So what are the precautions to avoid fire? The precautions are that we like as I have told you, that you should not play with candles, matches or lighters. Like children should not play with candles, matches or lighters around the house. Like if we are alone at home and we want to cook something, then we do not use cooking gas when you are alone, because maybe something can caught fire. Maybe you are, sometimes a person is absent minded and he turn on the stove and he doesn't know that he didn't light it, and it keeps on working. So in that case, it can cause a fire, it can cause a like blast. So we should be careful. We should not use cooking gas when we are alone, and do not stand too close to open fires. Do not cook or burst crackers while wearing synthetic clothes. Like crackers होते हैं, हमें उनको नहीं burst करना चाहिए while wearing synthetic clothes. Means when we are wearing artificial clothes. Do not allow, like अगर पेट्रोल पंप है वहाँ पे अगर कोई मतलब गाड़ियाँ आती हैं पेट्रोल फिलिंग के लिए, तो समटाइम्स जो है वो इग्निशन हो जाती है, तो अगर कोई लाइटर या मैस्टिक जला दे एकदम, तो वो समटाइम्स जो है वो फायर कैच कर सकते हैं. इस तरीके से वी शुड नॉट यूज ओपन फ्लेम्स. Okay, if caught in a fire, so what should we do if we are caught in a fire? So we should dial 16 to call the fire service. Students, you need to share your screen. I mean, you need to turn on your cameras so that I will know what you are studying. We are on page number 62. And I'm repeating the concepts if anyone has any problem so they can understand. Okay. So what happens if we are caught in a fire? Like we can dial 16 to call the fire service. And if we are stuck inside a building which is on fire, then what should we do? We should wrap a wet cloth around our mouth. Like we have also studied that if, for example, our clothes are on fire, then we should remember 3 words like stop, drop, and roll. So what is the meaning of these 3 words? As I have told you, that stop means like we should stop. First, we should stop. We should not run. Then drop, okay, then we should drop to the ground, and then roll. Then we should cover ourselves with a blanket and roll on the ground. So in that way the fire will put out. So we should not run. So in case of emergencies, like if the building is on fire and we are in a building which is on fire, then we should leave using the emergency exits. There are always emergency exits in the buildings. So we should not use the lifts. As I've told you, we should not use lifts because the lifts can stuck. Okay, lifts can get stuck. वो फंस सकती है and we can get trapped and it will be dangerous. So we should leave the building using staircase and an emergency exit. And follow all posted. Okay, there are always directions for fire exits because it happens. Sometimes there is a fire. तो उस केस में we should follow the directions. उन्होंने बताया होता है कि fire की केस में like if there is a fire, then these are the directions. These is the fire exit. तो वो हमें follow करना चाहिए. ठीक है? So आपको पता है कि fire किस तरीके से cause होती है. And I want to ask one thing, that which gas causes fire? Yes, Marich, you can tell me which gas causes burning. जी Marich, which gas causes burning? Miss oxygen.
G. Oxygen causes burning. So why are they saying if we are on fire we should stop, drop and roll? Because if we keep on running, the fire will get more oxygen and it will burn more, and in this way the fire will not stop. If we keep on running, we are thinking that we will get freed from fire, but we will not, because if we keep on running, the fire will get more, it will spread more and more if we keep on running, because it will get more and more oxygen. So to stop that oxygen contact from burning a body, okay, we should stop. Okay, we should stop first, then we should drop to the ground. We should not panic, we should drop to the ground, and then we should wear cover ourselves the blanket or some kind of a thick cloth, so that it will stop the oxygen contact with the fire. And as soon as the oxygen contact with the fire stops, the fire also stops. So this is in the case of a fire. Then we have studied, like these are just terms like I'm repeating today. So you have to learn the question answers. Your homework is you have to learn the question answers, because now I will listen one by one. I will repeat one chapters and I will listen the question answers. So I'm repeating it for you. You have to listen to it carefully. What to do in case of electrical fire? Next bold में लिखा हुआ है. For example, if there is an electrical fire, like circuit में आग लग गई है, what you can do in that case? Should you throw water over it? No, we cannot throw water over, because I have told you about two things: conductors and insulators. ठीक है, conductors and insulators. Conductors क्या होते हैं? Which conduct electricity. ठीक है, which pass electricity through them. Insulators क्या होते हैं? Which do not conduct. Okay, जो conduct नहीं करते. So there are two things, conductors and insulators. अब अगर conductors है, so now if we throw water over an electric circuit, what will happen? Water will conduct electricity. उससे जब हम water throw करेंगे, तो वो जो हमारे मतलब गीले हाथ होंगे या water हमारे ऊपर भी spill हो जाएगा, तो वो current जो भी heavy shock है वो किसको लग जाएगा? हमें लगेगा. We will get that electric shock, and it will be very heavy shock. Okay, so we should never use water to put out an electric fire. Understand? We should never use water to put out an electric fire, because it can give a heavy shock and may even cause death. So what can we do in the case of an electric fire? Like we can turn off the main switch, like main boards होते हैं ना जो घरों के बाहर लगे हुए होते हैं, जिनसे सारे switches control हो रहे होते हैं. We should turn off that main switch. हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उसे turn off. लेकिन कैसे turn off करना चाहिए? By using rubber, by wearing rubber slippers, okay, or rubber shoes. ठीक है, because rubber is an insulator. Now I come towards insulator. First conductor, then insulator. Conductor allows electricity to pass through it. Insulator does not allow electricity to pass through it. So that is the difference between conductor and insulator. What does a conductor do? Conductor allows electricity to pass through it, and insulator does not. Yes, Marish, can you tell me what is the difference between conductor and insulator? Ji Marish, can you tell me the difference? Okay, I will ask in the end. So conductor and insulator, I will repeat once again. Conductor means which allow electricity to pass through it, like water hai, wires hai, metals hai, they are all conductors. Or insulators, जैसे rubber है, plastic है, glass है, they are all insulators which do not allow current to pass through. Okay, next is how to put out a fire caused by. अब हमने तीन चीजें देख ली. Like if a person caught fire, if a place, like if a
something else caught fire, like some cloth or something, we can use water, we can use a fire extinguisher in that case. Okay, if a building caught fire, we can use a fire extinguisher, we can use water as well. But if an electric circuit caught fire, if a board caught fire, what we should do, we should never use water. Okay, because water is a conductor. In that case, we can use insulators. Okay, we can like wear plastic, we can shoes, plastic gloves भी पहन सकते हैं, और इस तरीके से we can turn off the main switch. Okay, how to put out a fire caused by oil. अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ऑयल और वाटर में क्या डिफरेंस है. ऑयल इज मोर डेंसर देन वाटर. ऑयल हैज अ डेंसिटी लेस देन वाटर. ठीक है, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है. ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर. वाटर इज मोर डेंस. जो चीज़ ज़्यादा डेंस होती है वो सिंक कर जाती है, जो चीज़ कम डेंस होती है वो ऊपर आ जाती है, फ्लोट करती है. ठीक है, सो जैसे अब वाटर है, वाटर बीइंग मोर डेंसर देन ऑयल, इट विल सिंक, मतलब वो नीचे फ्लोट करेगा. एंड ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर, इट विल फ्लोट ऑन द टॉप. जैसे आप देखते होंगे अक्सर समटाइम्स वाटर ऑयल ड्रॉपलेट्स गिर जाए पानी के ऊपर, किसी ग्लास में पानी लिया उस पर ऑयल ड्रॉपलेट्स आप अगर डाल के देख सकते हैं, यू कैन जस्ट चेक इट. If you just put 1 or 2 drops of oil on water in a glass of water, then you will see that the oil doesn't sink inside the water. Oil उसके अंदर जाके mix नहीं हो जाता. Oil will float on the top of the water. How? Why? Because oil is lighter than water. It has a density less than water. That's why it floats on the top and keep burning. So in that case, when we are studying, if there is a fire that is caused by oil, like kerosene, petrol or diesel, so what we should use a fire extinguisher or sand. Never use water in that case. ऐसे अब हमने दो चीजें पढ़ ली जिसमें हमने वाटर यूज नहीं करना. ठीक है, एक तो होगी कि इन केस ऑफ अ फायर कॉज्ड बाय ऑयल एंड इन केस ऑफ फायर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इन दोनों चीज़ों में वी शुड नेवर यूज वाटर, बिकॉज उसका अलग केस था. इस केस में क्या है कि वाटर बीइंग डेंसर देन ऑयल, इट गोज डाउन. ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर, इट फ्लोट्स ऑन टॉप एंड कीप बर्न. वो उसके ऊपर ही रहेगा और बर्न करता है. ठीक है, ओके. सो नाउ वी हैव डन टिल हेयर. अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है फर्स्ट एड. ये भी एक दफ़ा इसमें जो डेफिनेशंस है, आई विल रिपीट द डेफिनेशंस. Most of the students have some problem with this topic, so I will repeat again. If there is any problem, then you can just tell. First aid क्या होती है? What is first aid? Like any kind of help which we can give on the spot, that is called first aid. जैसे for example, अब हमारे सामने कोई accident हो गया, we see an accident through our eyes. हमने हमारे आंखों के सामने accident हो गया. So हमारी क्या कोशिश होगी? If we are having some kind of a first aid box or something, then we should used to treat that person. लेकिन अगर वो person ज़्यादा injured है, he is in a bad condition, then what should we do? We should call the ambulance. Ambulance जो है, अगर जब ambulance आती है तो उनके पास जो staff होता है, वो उनके पास वो first aid treatments होती हैं जो वो on the spot उस patient को दे सकते हैं. So they give the patient on the spot treatment before taking him to the hospital. उसको on the spot वो जो treatment देते हैं, यानी उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं और जो भी मतलब उसको ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. ऑन द स्पॉट इमीडिएट ट्रीटमेंट बिफोर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल इज कॉल्ड फर्स्ट एड. अब इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फर्स्ट एड बॉक्स एट आवर होम्स, वी हैव फर्स्ट एड बॉक्स इन स्कूल्स. ठीक है, या जहाँ हम काम करते हैं या जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, वट एवर. सो वी हैव फर्स्ट एड बॉक्सेस ओवर देयर, नॉट नेसेसरी बट देयर आर. तो वो क्यों होते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स पे कुछ भी हो सकता है. हम लोग बैंडेजेस रख सकते हैं. जैसे मैंने आपको, हम लोगों ने जब इसके स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो हमने पढ़ा था कि जो वार्म अप था, वी हैव डन दैट वार्म अप एंड वी हैव स्टडीड इट, बट वी कैन कीप इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. वी कैन कीप कॉटन, वी कैन कीप आयोडीन, वी कैन कीप सनी प्लास्ट, वी कैन कीप थिंग्स लाइक दैट ना. हम ये चीज़ें उसमें रख सकते हैं. सो ये इसलिए कि अगर घर में अक्सर बच्चों को चोट लग जाती है, भागते भागते गिर जाते हैं, सो उन्हें कट्स, दीज आर कॉल्ड कट्स. ठीक है, कट्स एंड ब्रूसेस. अगर उन्हें इस दैट केस, लाइक अगर बच्चों को ऐसे कट्स पड़ गए हैं, ब्रूसेस हैं, मीन्स वो भागते भागते एकदम गिर गए हैं, तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन जस्ट
put some kind of an antiseptic cream over their wound. यानी हम अगर कोई जैसे कोई मतलब हाथ जल गया कोई तो उसके लिए अलग क्रीम्स होती हैं एंटीसेप्टिक क्रीम. वी कैन जस्ट पुट दैट क्रीम ओवर देयर हैंड्स और द प्लेस वेयर विच इज बर्न. ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज बर्न. या फिर अगर कट पड़ गया है तो वी कैन जस्ट फर्स्ट वॉश इट, देन वी कैन ऑल्सो पुट डेटोल ओवर इट एंड वी कैन ऑल्सो बैंडेज इट. ठीक है, तो ये सारी ट्रीटमेंट जो हम घर में भी देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एड treatment which we give at home as well. This is also called first aid. ये सब क्या है फर्स्ट एड. ये अगर हम फॉर एग्जांपल स्कूल में हैं और वी आर जस्ट प्लेइंग, ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन like they fell and hit their arm or leg something, और उनके आर्म और लेग जब स्क्रैच हो गए हैं तो उस टाइम पर हम उन्हें क्या करेंगे, we just wash, ask them to wash their hands and then we put an antiseptic cream और जो भी मतलब कंडीशन होगी, या फिर हम कोई बैंडेज लगा देंगे सो दैट इट कैन बी क्योर्ड. यानी घर तक जाते जाते तो उन्हें टाइम लगेगा ना. सो ऑब्वियसली एट दैट टाइम द हेल्प व्हिच वी गिव एट दैट टाइम, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. Next is which we have studied. Now this is word tourniquet. In the previous lecture when we were studying about this topic, this is an activity. It is very quite easy. इसको understanding भी इतनी मुश्किल नहीं है. It is read tourniquet. क्या होता है कि in case of excessive bleeding, जैसे कोई सर फट गया या something like that, तो excessive bleeding के केस में तो हम कोई bandage नहीं कर सकते ना, because it will not stop the blood. Okay, so in that case what we can do, we can use this technique which is called tourniquet. ठीक है, this helps to slow down the bleeding. What is the method tourniquet? ये क्या method है? So there is an activity below which have these steps given for this method. Number 1, make a loop around the limb. यानी जो भी limb damage है, जहाँ से excess bleeding हो रही है, आप उसके गिर्द क्या बनाओगे, एक क्लोथ की जो है वो लूप बनाओगे. Then you will tie it with square knot. Means square knot उन्होंने आपको बना के दिखाया है कि आप उसको कैसे tie कर सकते हैं. Then what you should do next, pass a stick under the loop. What should be the next step? That you should pass a stick under the loop. फिर आपने जो लूप बनाया है, यानी जो गिरा बांधी है, फिर उसके नीचे से आप क्या पास करेंगे, स्टिक. What will be the third step? Tighten the tourniquet just enough to stop bleeding. यानी आपने इतना उसको, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते ना तो वो खून रोक देती है, तो इसलिए अगर समटाइम्स होते हैं बच्चे रबर बैंड भी डाल लेते हैं हाथों में तो वो खून रोक, यानी जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है. तो हमने उसको इतना ही टाइट करना है कि वो ब्लड फ्लो जो है उसको रोक सके. सो वी शुड टाइटन द tourniquet इन जस्ट इनफ टू स्टॉप द ब्लीडिंग. देन व्हाट वी शुड डू, अब देखो अगर ऐसी स्टिक होगी तो वो तो हिलती रहेगी, यानी वो तो टाइटली हम इस तरीके से तो बाइंड कर ही नहीं सकते. तो इन द लास्ट स्टेप व्हाट वी शुड डू, बाइंड द फ्री एंड ऑफ द स्टिक टू द लिंग. फिर हम उसको फ्री एंड को भी हम बाइंड कर देंगे to keep tourniquet from unwinding. ताकि तो tourniquet simply it is a method to stop excessive bleeding. To stop excessive bleeding, it is a method in which we are using a cloth and we are using a stick. So and there is a technique to just bind that cloth and the stick. So it will stop the excessive blood from flowing. So this is called tourniquet. This method is called tourniquet. This strip of cloth is called a tourniquet. Next, sprains and fractures. अब sprain और fractures में क्या difference है? In the previous lecture when we have studied this, I have told you that sometimes we have a sprains. Sprains होते हैं जैसे गिर गए हैं, मोच आ गई है. Sometimes there is a swelling on our knee, on our joints. ठीक है, हमारी किसी भी चीज़ पे जो है, यानी ankle, knee, wrist, इन पे जो है वो अक्सर swellings हो जाती हैं गिरने से, चोट लगने से. So how can we just lessen that swelling? We should apply an ice pack on the injured joint. हमें उसके ऊपर क्या रखना चाहिए, आइस, मतलब आइस से उसको कवर करना चाहिए. Means ice pack apply करना चाहिए. Later, tie a bandage firmly around that joint. ठीक है. Then what we should do in the next step? What should be the next step? That we should tie a bandage around that joint. फिर हमें उस जॉइंट के गिर्द एक बैंडेज कर देनी चाहिए. ओके, टाई अ बैंडेज अराउंड दैट जॉइंट. सो दिस इज अ स्प्रेन, दिस इज स्प्रेन्स. व्हाट इज अ फ्रैक्चर? फ्रैक्चर मीन्स ब्रोकन बोन. अ फ्रैक्चर इज अ ब्रोकन बोन. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड easily. Okay, it have to be
treated like we should take the fractured person to the hospital, or if we, or there is one more thing, if we wanted to do the treatment at home, then what should we do? ये मैं आपको भी बताती हूँ. Firstly, what is a fracture? Broken bone, which needs immediate medical attention. So, what are splints? Splints हैं these, like you can see on your uh, right hand side of your book. You can see an arm. It is having twigs. Twigs क्या होती है? Branches of trees. ये branches जो पतली sticks type होती है ना, जो टहनी होती है, like that. So they are called twigs. So we should put twigs opposite direction of the injured arm, ठीक है, या injured bone, and we should place 2 twigs and then bind them with knots. इस तरीके से हम उसको bind भी कर देंगे जैसे आपको उस picture में नजर आ रहा है. Yeah, we should place 2 twigs in opposite direction of the injured bone, and then we should tie them with a knot. So it will keep the arm, the fractured arm in place. जो fractured arm होगा वो आपका जगह पे रहेगा, and it will not move. So in that way it will not move and the bone will heal too. इस तरीके से वो bone जो है वो heal up हो जाए. So this will prevent the bone from moving and getting more damage. So this is called splints. 2 flat twigs placed opposite to each other on a broken bone or an injured bone, they are called splints. अब स्लिंग क्या है? स्लिंग जो आपको पता है, in case of fracture, when we take a fractured person to the hospital, they put slings around the broken. If the arm is broken, या जो भी अगर मतलब आर्म की बोन ब्रेक हो गई है, then they put a sling around that person. और उसको वो सपोर्ट किससे देते हैं कि वो उसको नेक के गिट से घुमा के लेकर आते हैं ताकि वो सपोर्ट रहे. वो आर्म आपने ऐसी ही डायरेक्शन में रहते, वो मूव भी नहीं हो सकता और वो मूव करना भी नहीं होता, मतलब आप उसको स्ट्रेट नहीं कर सकते. यू हैव टू लाइक कीप द आर्म इन दी राइट डायरेक्शन. मतलब इस तरीके से ही जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट पिक्चर नजर आ रही है ना, वैसे ही आपने रखना होता है. आप उसको स्ट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इस तरीके से जो है वो आपकी बोन ज्वाइन नहीं होगी. यू हैव टू कीप इट इन दैट पोजिशन सो दैट द बोन विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. बोन को ओरिजिनल प्लेस पे लाने के लिए हमें उस आर्म को ऐसे ही रखना पड़ता है. सो दिस इज नोन एज अ स्लिंग. What is it known? It is known as a sling. Okay. Now, animal bites. ये तो है कि if there are animal, like if a dog bites you or if an animal bites you, so you should take the injured person to the doctor immediately. But firstly, what you can do, you should wash the wound and apply an antiseptic before taking him to the doctor. So last, rabies and hydrophobia. So what is rabies? Rabies is a very serious disease. It is a very dangerous disease. It is caused from bites from animals. Animals कौन-कौन से? जैसे dog है, monkey, wolves, bats. They can cause a serious disease called rabies. This disease is also called hydrophobia. Hydrophobia का मैंने आपको मतलब बताया था. Hydro means water and phobia means fear. If we are afraid of something. So hydrophobia means fear of water. Means the person is afraid of water from going near the water. वो person उस water के करीब नहीं जा सकता. ठीक है? He cannot go near water, any kind of water. So this is a disease caused from animal bites. Rabies बोल सकते हैं या हम इसको hydrophobia भी बोलते हैं. So I have given you one project. I will discuss it now. जो project मैंने आप लोगों को दिया था, Marriage, you have completed that project. You have shown me yesterday, but none of the other students have shown me. So I'm telling again that you can make a project on either one of the 2 topics which are on the page number 66. You can either make a project on roadside signs by collecting pictures and writing what they mean. And you have to write what are the signs telling. ये जो road signs होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, you have to tell. Or you can make a project on bicycle safety in which you can write rules of riding a bicycle, or you can write steps following bicycle safety, and you can make a project. ठीक है, इसके मैंने आपको बताया था ये आप कैसे बना सकते हैं. इसके अलावा we have done the exercise. So you have to write the new words, and now you have received notes of chapter number 7. Marriage, have you received? So you can now complete the question answer so that we can move on the next chapter.
ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो you have to complete the question answers and exercise of this chapter. जी मारिच, you have you completed? मैं डाल देती हूँ वो देखिए. Yes मारिच, have you completed the question answers? I mean डाली थी मैंने कहा आने तक की डाल देती हूँ. Yes मारिच. No, you have done the project. I've seen it. I'm asking, have you done? Have you received the question answers? So, students, where you uh, start writing the question answers of this chapter, and also you have to learn these question answers. आपने अब से आपने लर्निंग स्टार्ट कर देनी है. चैप्टर 7 और चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लर्न करें. फिर मैं आपसे जो है वो नेक्स्ट वीक में सुनूंगी. I will listen from you the question answers of chapter number 7 and chapter number 6. So you must complete it, and our next class is on Thursday. So you must write it, these question answers by then. Okay, so what is that? Then we will start the next chapter on Thursday. So now I'm going to ask question answers from you. What we have studied in this chapter. Yes, can you tell me what we should keep in a? Yes, unmute yourself, Marij. Can you tell me what we should keep in a first aid box? You can unmute yourself. To get iodine, medicines, Dettol, Yes. sanitizer, cotton, Okay, so now can you tell me what we can do in the case of an electrical fire? If there is an electrical fire, what we should do? and tourniquet, So bandage, polypack, Marij, I'm asking what we can do in the case of electrical fires. मैं नीचे खाऊंगा लेकिन बड़ा बाइट नहीं. G. What we can do in the case of an electrical fire? Now you need to answer me, Marij. What we can do in the case of electrical fire?